अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू BTH लर्निंग सेंटर। फ्रेंड्स, हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया है विच इज़ सब्ट्रैक्शन। सो इन माय फर्स्ट वीडियो आई गाइडेड यू अबाउट that what is subtraction from the very basics, and in the next video I have guided you about subtracting tens without regrouping. Now in this video I'm going to guide you that subtracting ones without regrouping. So friends, let's start our topic. So what is subtracting ones without regrouping? Like you have a number on the ones place, there is nothing on the tens place, so you have to subtract that number from the other number. So let's take an example. Like I am having a example subtracting. Let's write this one, subtracting. Let's start from the very first number, like subtracting 1 from 25. Like I have written here, subtracting 1 from 25, or subtract 1 from 25. You have to write subtract 1 from 25. So what is the first step? I have told you in my previous videos, like your first step would be that you have to write the places over the numbers. Like in 25, 5 is on the ones place, and in 2 is on the tens place, and here only 1, so 1 is on the ones place. So write the places over here also, 1 and 10. So write the number 5 is on the ones place, 2 is on the tens place, and here only 1 is on the one place and there is nothing on the tens place. Now what you have to do here, you have to draw 5 lines, 5 balloons, 5 pencils, anything which you want to draw. Like I'm having here the number 5. Let's suppose I'm going to draw 5 balls here, 1 2 3 4 and 5. I have drawn here 5 balls, 1 2 3 4 5. Now my friend is saying that please give me your one ball. I have no ball to play, so I have to give my one ball to my friend. So what I have to do, I will cut this ball because I have given this ball to my friend. Now this ball is no more, nothing, no more with me, so I have left with all these balls. So let's count these balls, 1 2 3 and 4. So I'm going to write 4 here, and 2 will come as it is here because there was nothing on the tens place. So हमने किसी को भी कुछ नहीं दिया here, so answer will 24. So this is subtracting ones. Like we have numbers only on the ones place, and regrouping shows that इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी दिया है regrouping का. So here is also going to tell you very little about the regrouping. Like from here कि मेरे पास सब कुछ था, मतलब my friend asked that give me one ball, so I have enough ball to give my friend. So let's suppose अगर मेरे पास इससे मेरे पास 5 balls थी and my friends will ask that I need 6 balls, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, मुझे कुछ बॉल्स जो है वो अपने साथ वाले हाउस से या उनके मेंबर से जो है वो बोरो करना पड़ती. सो आगे भी मैं आपको रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, और इससे पहले एडिशन की वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो आप उधर से भी देख सकते हैं. सो पिछले मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि सब्ट्रैक्टिंग टेंस में लाइक यू कैन डू बैकवर्ड काउंटिंग आल्सो. And here when the numbers are small, like only 0 is like number is on the only ones place, so you can also use backward counting. Like 25, you have to subtract -1. So अगर हम काउंटिंग, लेकिन 25 तक काउंटिंग ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. So 25 -1, the result will be 24. Here you have to minus from this number here, from ones -1. देखिए जो नंबर था, सॉरी यू हैव टू -1. सो मैंने वंस में से वंस को माइनस कर दिया. दिस इज कॉल्ड, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड रीग्रुपिंग. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. तो friends, I have written this example here. Another example, like subtract 5 from 55. So what is your first step? Your first step is you have to write the places over the numbers. Like here is the number 55, so you write the places on the number 55, 0 and tens.
and from here 5 is on the ones place. You are going to write ones here. So ones and tens. 55, 5 and 5. Here 5 is on the ones place. So I have written here 5. So my friend is asking that give me 5 balls. Which number is on the ones place? 5. So I'm going to draw here 5 balls. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So which number is with minus sign, like 5? It means that my friend is asking that please give me 5 balls. Now I have to give my friend 5 balls. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, I have given all the balls from here, so I have left with nothing. There is nothing with me, so I'm going to write here 0 and 5 will come as it is. So 50 will be the answer. जी फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक, दैट वाज सब्ट्रैक्टिंग वंस विदाउट रीग्रुपिंग। हमने पहले सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया, फिर सब्ट्रैक्टिंग टेंस विदाउट रीग्रुपिंग डिस्कस किया, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग वंस विदाउट रीग्रुपिंग डिस्कस किया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सब्ट्रैक्टिंग वंस एंड टेंस विदाउट रीग्रुपिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा सकें। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करती चलूँ। आजकल का जो दौर है उसमें हमें नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए ताकि हम इंसानियत की भलाई भी कर सकें। हाँ जी फ्रेंड्स, सो अपनी आज की वीडियो इस टॉपिक के साथ, इस मैसेज के साथ ख़त्म करते हैं कि सीखते रहें और सिखाते रहें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।